Assalamu alaikum. My name is Mariam. I'm the student of B.Ed Honors Elementary Part 3, Semester 5 from Faculty of Education, University of Sindh, Jamshoro. The course title is Educational Psychology and the presentation topic is Social Learning Theory assigned by a teacher, Dr. Amjad Ali Arai. I will proceed my presentation by a famous quotation of Albert Bandura, that is, most learning is gained by people's perception and thinking about what they experience. They learn by copying the examples of others around them. Social learning theory was proposed by Albert Bandura. He was born on December 4, 1925 in Canada. He did PhD at University of Iowa in 1952, where he developed his social learning theory. He is the originator of social cognitive theory, who is probably best known for his modeling study on aggression, referred to as the Bobo doll experiment. In Bobo doll experiment, he demonstrated that children can learn behaviors through the observation of adults or from their surroundings. Bandura believed that direct reinforcement could not account all types of learning. In his theory, he added a social element, arguing that people can learn new information and behaviors by watching other people, that we call as observational learning. People learn through observation. Observation is the act of watching something or somebody carefully for a period of time, especially to learn something. Then imitation. Imitation is the act of copying something or somebody, that is, we imitate our adults, we imitate our favorite celebrities, we imitate our teachers too. Then modeling. Modeling is referred to as a person or thing that is considered as an excellent example of something. Moving towards social learning theory proposed by Bandura, he added two important ideas that are discussed below. Number 1, mediating processes occur between stimuli and responses. मतलब इसमें यह है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कुछ मेंटल प्रोसेसिंग होती है, जिसको हम मीडिएशन प्रोसेसिंग की तरह यहाँ पर देख रहे हैं. Furthermore, he added one more point, that is, behavior is learned from the environment through the process of observational learning. इसमें इन्होंने ये कहा कि we may learn many things from our environment too, just by observing it. So these were the 2 points that were added in social learning theory. Moving towards observational learning. In this, children observe the people around them behaving in various ways. This is illustrated during the famous Bobo doll experiment by Bandura in 1961. In this point, he completely analyzed the learning process, that how children learn just by observing. Individuals that are observed are called models. फिर उन्होंने ये कहा कि जिनको स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको इस एक्सपेरिमेंट में मॉडल कहा गया. In society, children are surrounded by many influential models, such as parents within the family, characters on children's TV, friends within the peer groups, and teachers at school. इसमें यह है कि जब हम छोटे बच्चों को देखें तो उनके पास जितने भी लोग चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, उनके फैमिली मेम्बर्स हों, उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स हों या उनके फ्रेंड्स हों, वो सभी को देखकर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. और फिर इन सबको एक कैटेगरी में रख दिया और नाम दिया मॉडल्स. तो बंदूरा ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, जो आगे है. बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में ये हुआ था कि बोबो डॉल इज़ इनफ्लैटेबल टॉय दैट इज़ अबाउट 5 feet tall and is usually made of a soft, durable vinyl or plastic. This Bobo doll was often painted to look like a clown. From 1961 to 1963, Bandura conducted experiments with the Bobo clown doll to see the degree to which children would mimic the behavior of adults. In this experiment, he took 72 children of age group 3 to 6, and it contains 36 girls and 36 boys. They were divided into 3 groups, out of which 24 children were in a number of 24, 24 and 24. Out of which 24 children were exposed to the aggressive model and the other 24 were exposed to a non-aggressive model, and remaining 24 children comprised of a control group. Group 1 was adults playing with the doll in an appropriate manner, and they watched and they played with the doll nicely.
Whereas Group 2 observed adults treating the dolls aggressively and violently. They punched, threw, and pulled the doll. And Group 3 children ignored the doll first and they start playing with the other with the other toys present over there at that time. और फिर इसके मतलब हर ग्रुप का एक अलग अलग रिज़ल्ट निकला था बंदूरा के एक्सपेरिमेंट में। इसका ग्रुप 1 का रिज़ल्ट अलग था, ग्रुप 2 का अलग था, ग्रुप 3 का अलग था। तो रिज़ल्ट जो आए थे वो उनके 3 थे। पहला ये कि चिल्ड्रन एक्सपोज टू द वायलेंट मॉडल टेंडेड टू इमिटेट द एग्जैक्ट बिहेवियर दे हैड ऑब्जर्व्ड व्हेन द एडल्ट वाज नो लॉन्गर प्रेजेंट। मतलब उन जब लोगों ने बच्चों ने जब वीडियो में देखा था कि वो जो एक अडल्ट है वो डॉल को अग्रेसिवली मार रहे हैं या उसको उठा के फेंक रहे हैं, तो बच्चों ने बिल्कुल वही वो बिहेवियर इमिटेट किया तब। और सेकंड रिजल्ट ये था कि चिल्ड्रन हु ऑब्जर्व शोइंग लविंग बिहेवियर टुवर्ड्स ए बोबो डॉल कॉपीड दैट बिहेवियर। और जिन चिल्ड्रन ने देखा था वीडियो में देखा था कि बोबो डॉल को जो अडल्ट हैं वो उससे खेल रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं या कुछ भी, उन्होंने वही बिहेवियर इमिटेट किया। और नंबर 3 जो था चिल्ड्रन हु ऑब्जर्व अडल्ट्स इग्नोरिंग द बोबो डॉल डिड नॉट शो अग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स इट। मतलब उन्होंने बोबो डॉल को टोटली इग्नोर किया जैसे उन्होंने वीडियो में देखा था और दूसरे टॉय से खेलने लग गए। तो ये 3 रिजल्ट्स निकले थे और इसमें बंदूरा कंक्लूडेड दैट पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। और फिर उन्होंने कहा था कि हाँ मतलब जो लोग हैं वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीख सकते हैं, इमिटेशन है और मॉडलिंग के थ्रू। तो और फिर बंदूरा ने ये कहा कि पीपल नॉट ओनली लर्न बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड इट्स बट दे कैन लर्न फ्रॉम वॉचिंग समबडी और somebody being rewarded or punished। तो ये था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट और इसके ये 3 रिजल्ट्स आए थे। So moving towards the next, that is mediational process. Mediational processes are mental cognitive factors that intervene or occur in the learning process to determine whether a new behavior is acquired or not। फिर बंदूरा ने mediational processes के the 4 mediational processes were proposed by Bandura. Number 1 is attention, number 2 retention, number 3 is reproduction or production, and number 4 is motivation. Moving towards attention. Attention is the extent to which we are exposed or notice the behavior. For the behavior to be imitated, it has to grab our attention. We observe many behaviors on daily basis, and many of these are not noteworthy. Attention is therefore extremely important in whether a behavior influences others imitating it। तो attention में ये है कि जब तक हम किसी चीज़ को attention से देखेंगे नहीं तो ऑब्वियसली हम उस बिहेवियर को वापस रिपीट भी नहीं कर पाएंगे। और जैसा हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मतलब स्टूडेंट जो है फुल अटेंशन के साथ सुन रहे हैं और वो उसी चीज़ को रिपीट करते हैं जिसको वो बड़ी ध्यान से सुनते या देखते हैं। और जब अटेंशन आ जाएगी किसी